Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with decoding the important news from the Hindu newspaper and various other websites also. आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अर्पिता शर्मा। ये है अर्पिता शर्मा क्लासेस और आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिकोड करेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर से भी न्यूज़ ली गई है, एडिटोरियल्स 3 एडिटोरियल्स भी लिए गए हैं और बहुत सी बाकी की वेबसाइट्स भी हैं जहां से हम न्यूज़ को कवर करेंगे। We have taken 3 editorials also today to decode. Let us start the class with the very important news on page number 6. There is a very colorful, very bright picture of different pots. A woman is making pots in that picture on page number 6 of the Delhi edition, Delhi Noida edition of the Hindu newspaper. Now that picture talks about मकर संक्रांति। अब एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर है पेज नंबर 6 पर। अगर आप देखेंगे, हिंदू न्यूज़पेपर को ओपन करेंगे, दिल्ली नोएडा एडिशन का जो न्यूज़पेपर है उसमें आप देखेंगे एक महिला है जो कि पॉट्स बना रही है, मटके बना रही हैं बहुत सारे। तो वो पिक्चर मकर संक्रांति से रिलेटेड है। मकर संक्रांति इज अ पार्ट ऑफ योर आर्ट एंड कल्चर। हमारे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है मकर संक्रांति। डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑल्सो यू हैव टू स्टडी। इफ यू हैव गॉन थ्रू द सिलेबस, you will know that you have to study different festivals also which are celebrated in India, right? And in what part of India they are celebrated, what do they signify, etc. आपको पता होगा अगर आपने सिलेबस पढ़ा होगा यूपीएससी का कि डिफरेंट हमें आर्ट एंड कल्चर में फेस्टिवल्स भी पढ़ने पड़ते हैं। वो फेस्टिवल्स जो है वो भारत के किस भाग्य में, किस राज्य में सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये भी हमें तैयार करना पड़ता है। So Makar Sankranti is important for your prelims and GS paper 1. Now this is a harvest festival. Makar Sankranti ना एक तरीके का harvest festival है। Festival of Makar Sankranti is being celebrated today when the sun enters the Makar zodiac and the days begin to lengthen compared to nights. होता क्या है, जब मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है तो दिन लंबे हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती हैं। और कहा जाता है रिलीजियसली जब मकर साइन में, मकर जोडियाक साइन में सन की एंट्री होती है तब इस तरीके के फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं। सो इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया इट इज सेलिब्रेटेड एंड इट इज नोन थ्रू डिफरेंट नेम्स ऑल्सो। देखो, मकर संक्रांति हम बोलते हैं नॉर्थ पोर्शन में, इंडिया के भारत के नॉर्दर्न पोर्शन में मकर संक्रांति बोलते हैं, बट भारत के बाकी हिस्सों में भी इस फेस्टिवल को अलग अलग नामों से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन साउथ इंडिया एंड पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु इट इज नोन एज पोंगल. It's the festival of Pongal which is celebrated over 4 days at harvest time. South India, particularly हम तमिलनाडु में जब बात करते हैं राजा बलि की जब बात आती है, पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। माघ बिहू इज मकर संक्रांति इज फॉर्म ओनली बट इट इज नोन एज माघ बिहू इन असम and many parts of northeast. Festival of Magha Bihu is celebrated and it is the first harvest of the season which is being offered to the gods along with prayers for peace and prosperity. Uttarayan, which is Makar Sankranti only, but it is known as Uttarayan in Gujarat. So it's kind of kite festival of Uttarayan. Maghi, Makar Sankranti is also known as Maghi in Punjab, celebrated as Maghi. Bathing in a river in the early hours on Maghi is very very important and spiritual. Saji, Makar Sankranti is also known as Saji or Magha Saji, and it is celebrated in Shimla. So it's a very pahadi word for Sankranti and this day marks the start of the month of Magha also. It is also known as Kicheri in Uttar Pradesh. It involves ritual bathing right before the sun rises. Now moving forward, Makar Sankranti is a Hindu festival that is dedicated to express gratitude, thankfulness to the sun god who is also known as Surya or Aditya. Right? And it is observed in the second week of Jan every year. हर साल जनवरी के second week में इसको celebrate किया जाता है. Now outside India also Makar Sankranti is celebrated. Shakrain, it is an annual celebration of winter in Bangladesh observed with flying of kites. So you remember this particular term, right? अब ये prelims के लिए देखो मैं अभी बता रही हूँ, फिर ये मत बोलना कि ये हमने पढ़ा नहीं या हमसे मिस हो गया या सिली मिस्टेक हो गई या भूल गए। ठीक है, ऐसा मत करना, अभी से नोट्स बना लो। शक्रेन
It is festival of Bangladesh. Makar Sankranti, it's a Nepalese festival observed on the 1st of Magh month in the Bikram Samvat Hindu solar Nepali calendar. About 14th of Jan, it is celebrated in Nepal. Now, Zokutpoi festival. Mizoram government is going to organize Zokutpoi globally to unify Mizo tribe. So it's a first festival which will be held at Wangmun, which is a hub town of Mizos in neighboring Tripura. And the event aims at reunifying and strengthening brotherhood among different tribes of Mizo. So you have to remember this particular festival, Zokutpoi, is related to which state? Mizoram. Next important topic, new satellites will help Gaganyaan crew. This is on page number 9 related to your GS paper 3 as well as your prelims. India plans to ring in its own era of space-to-space tracking and communication of its space assets in 2020. अब हम सभी को पता है, हमने 2-3 दिन पहले भी 2 जैन के अराउंड भी जब हमने हिंदू डिकोड तैयार किया था, उसमें भी हमने पढ़ा था कि इस साल काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉन्चेस होने वाले हैं और कुछ ऐसी रिसर्च वर्क चल रही है, ऐसी ट्रेनिंग चल रही है जो 2022 में भी जाकर हमें देखने को मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल गगनयान. So the IDRSS, that is Indian Data Relay Satellite System. It's a new satellite series, right, which is going to be put up. It is planned to track and be constantly in touch with Indian satellites, in particular those in low Earth orbits. अब ये जो IDRSS होगा, जितनी भी satellites Earth के low orbits में communication satellites वहाँ place किए जाएंगे, उनको track करता रहेगा, उनको constantly monitor करेगा ये IDRSS, Indian Data Relay Satellite System. It will be very helpful to ISRO, whose roadmap is dotted with advanced low Earth orbit missions. अब आपको पता है अभी कितने ऐसे launches होने हैं जो कि low Earth orbit related हैं. तो उन सभी launches में ये IDRSS हमें help करने वाला है. इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है. There are other countries also which have their own relay satellite system. For example, US, Russia, इनके पास 1970s, 80s से ही ये system था. हमारे यहाँ तो अभी develop हो रहा है, right? Now, cattle festivals turn Jallikattu events in Kuppam. This is very important. You have to remember for prelims. What is Jallikattu? It's a sport which is conducted as a part of Matu Pongal. Again, it's a part of Pongal only. Pongal 4 दिन का festival है ना, जो 3rd day पे celebrate किया जाता है ना, उसको Matu Pongal बोलते हैं. We all know that Pongal is a 4-day festival. So on the 3rd day, it is known as Matu Pongal. So on that day, this sport is conducted, which is known as Jallikattu. It is also known as Ezu, Tazu Vuthul or Manju Viratu. Tamil word Matu means bull, and the 3rd day of Pongal is dedicated to cattle. So bulls get precedence over cows because it helps in plowing of the field, pulling their carts of goods, and mating with cows to produce more offspring and also enhance the production of milk. So the bulls are brought to a common place where the ritual happens. So what happens is that the participants are supposed to embrace the bull's hump. जो bull का ऊपर hump होता है ना, जिसकी पीठ पे एक उभरा हुआ सा portion जो होता है, तो participants उसको hug करके रखते हैं. They try to tame it by bringing the bull to a stop. Jallikattu is derived from the words Kali, that is coins, and Kattu, that is tie, which means a bundle of coins is tied to bull's horns. In older times, the tamer sought to remove this bundle from animal's head to win gold or silver. अब जो सींग होते हैं ना बुल के, वहां पर ना कुछ सिक्के बांध दिए जाते हैं. तो जो टेम करने की कोशिश करता है, बुल को अपने काबू में करने की कोशिश करता है, वो अगर उस बंडल ऑफ कॉइन्स को निकाल लेता है और वो टेम कर लेता है, साध लेता है बुल को, तो वो उस कॉइन का हकदार होता है. वो सिल्वर, गोल्ड जो भी कॉइन्स होते हैं उनका हकदार बन जाता है. So he would be called brave and valorous and would also sometimes be rewarded with a bride. So there is a historical aspect of Jallikattu also. It is believed to have been practiced since at least 2500 years ago. ऐसा माना जाता है कि 2500 साल पहले से सेलिब्रेट होता आ रहा है. A seal from Indus Valley civilization depicting the practice is preserved in the National Museum in New Delhi. So it's also said that इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान भी इस तरीके के फेस्टिवल को शायद या इस तरीके की धारणा को शायद माना जाता था. एंड ऑल्सो इट हैज रेफरेंसेस इन मेनी तमिल एपिक्स लाइक कालितोगाई, मलाई पादुकादम, इन सिलापतिकरम also it is being referred. It's been referred. Next important news, state can regulate minority institutions, says Supreme Court.
In an important judgment which could have bearing on running of all government-aided minority educational institutions across the country, Supreme Court has held that such institutions cannot claim to have absolute right in deciding appointment of teachers, and it can be regulated by a government to ensure excellence in imparting education. So finally एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, right, it could have bearing on running of all government aided minority educational institutions. So Supreme Court has said कि जितने भी गवर्नमेंट द्वारा हेल्प किए गए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, तो उनके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि टीचर को कैसे अपॉइंट करना है. जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है उसमें उनका पूरा एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है. उनके अपना फैसला नहीं होगा प्रॉपर. गवर्नमेंट भी उनको हेल्प करेगी, गवर्नमेंट का भी से जाना जाएगा, उसको भी इम्पोर्टेंस, उनके ओपिनियन को भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी कि कैसे टीचर्स को अपॉइंट किया जाए और एजुकेशन इम्पार्ट की जाए. तो वो अपने खुद के फैसले पूरी तरीके से नहीं ले सकते. Managements of minority institutions cannot ignore such a legal regime by saying that it is their fundamental right under Article 30 of the Constitution to establish and administer their educational institutions. Government is aiding them, so government also has the equal say. अब कुछ minority institutions के managements बोलते हैं भाई आर्टिकल 30 का यूज करके हमारे पास हमारी ये फंडामेंटल राइट है, हम अपने हिसाब से एडमिनिस्टर करेंगे, मैनेज करेंगे अपने एजुकेशन सिस्टम को जैसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं. बट कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट आपको गवर्नमेंट आपको एड कर रही है. यू आर बीइंग एडेड बाय अस, सो गवर्नमेंट आल्सो हैज इट्स own opinion. So Article 30 says all minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. So what are the observations made by Supreme Court? Good quality of education cannot be compromised in national interest, whether it is any majority educational institution or minority educational institution. Supreme Court ने ये ऑब्जर्व किया कि देखो गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक स्टूडेंट का हक है, राइट, तो चाहे वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो या मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. So essence of Article 30 is to ensure equal treatment between majority and minority institution. Right, so if government has an opinion in the majority institution, it will have the same opinion, same stand in the minority institution also. So how to strike a balance between the two objectives of excellence in education and preservation of minorities right? अब आर्टिकल 30 को भी अगर हम देखें तो हमें माइनॉरिटी राइट्स को प्रिजर्व करना है, और अगर हम दूसरी बात वही देखें कि हमें एक्सीलेंस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है एजुकेशन में, तो इन दोनों ही फैक्टर्स में हम बैलेंस कैसे बनाकर रखें. The court explains how to strike a balance between the two objectives of excellence in education and safeguarding the rights of minorities also to run their own educational institution. For this, the court divides education into two categories. इसके लिए कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट कैटेगरी बिलोंग्स टू द सेक्युलर एजुकेशन, धर्मनिरपेक्ष जो होता है, एंड सेकेंड एजुकेशन डायरेक्टली एम्ड एट और डीलिंग विद प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज, कल्चर, स्क्रिप्ट, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. तो पहले एक कैटेगरी को हमने सेक्युलर एजुकेशन का नाम दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और सेकेंड कैटेगरी को बोला गया है कि ये उस तरीके का एजुकेशन है जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के राइट्स, चाहे रिलीजियस राइट हो, चाहे उनका हेरिटेज कल्चर हो, स्क्रिप्ट हो, राइट, उन सभी को प्रोटेक्ट करेगा ये कैटेगरी. When it comes to the latter means the second one, that is the directly aimed at or dealing with preservation, protection, etc. The court advocated maximum latitude to be given to management. अब देखो जब उस एजुकेशन की बात आएगी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वो जो कम्युनिटी है, उनके हेरिटेज कल्चर, स्क्रिप्ट, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या रिलीजन, उनको प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने से से रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, जब उस कैटेगरी सेकंड कैटेगरी की बात आएगी तो मेजर जो से होगा या स्टैंड होगा वो मैनेजमेंट का दिया जाएगा कि आपको जिस तरीके से अपॉइंट करना है टीचर आप करो. बट जब पहले कैटेगरी की बात आएगी जो कि सेक्युलर एजुकेशन है, उसमें गवर्नमेंट का भी ओपिनियन लिया जाएगा. The court reasons that only teachers who believe in the religious ideology or in the special characteristic of the concerned minority would alone be able to imbibe in the students admitted in such educational institution. So the first category there, that is the secular education, there the government will also has its own say, right? Clear? Now there are many special rights which are enjoyed by religious minority institutions, which are
Article 30, subsection 1, clause A. So the minority educational institution enjoy right to education as a fundamental right. So remember this article and what this article does for your prelims. Prelims के लिए ना ये याद रखना कि आर्टिकल 30 देता क्या है. आर्टिकल 30 जो है वो एक फंडामेंटल राइट बनाता है, राइट टू एजुकेशन को. किसके लिए? माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए. In case the property is taken over by state due compensation to be provided to establish institution elsewhere. मान लो स्टेट गवर्नमेंट को कुछ और बनाना है, कुछ हाईवे या कुछ जहां पर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना हुआ है और वो लैंड अब स्टेट गवर्नमेंट ले लेती है, तो स्टेट गवर्नमेंट उनको ये भी प्रोटेक्शन दिया गया है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कि स्टेट गवर्नमेंट कहीं और उनको वो इंस्टीट्यूशन खोलकर देगी, कॉम्पनसेशन देगी उसके लिए. Under Article 15, subsection 5, the minority educational institutions are not considered for reservation. Remember this. Under Right to Education Act, these are not required to provide admission to children in the age group of 6 to 14 years. Up to 25% of enrollment are reserved for economically backward section of society also. For example, आपने पढ़ा होगा 1992 का सेंट स्टीफेंस वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी केस, which ruled that minority educational institutions can have 50% seats reserved for minorities. Okay. Now, editorial number 1 which we are going to discuss is doing away with ad hoc teachers. Why it's in news? Because there, you all know JNU के fees hike का protest चल रहा था. उसी के साथ साथ ये ad hoc teachers का भी protest चालू हुआ था. So, protest has been going on in Delhi, spearheaded by Delhi University Teachers Association. It began after university issued a circular which ad hoc teachers saw as an attempt to hire them as guest teachers instead. So according to the university's guidelines, an ad hoc appointment may be made in case there is a sudden, unexpected and short vacancy arising out of sudden sickness or death on medical grounds, abrupt leave or any other situation that may disrupt the normal process of teacher learning. So अभी हाल में अभी जो डेटा आया है उसके हिसाब से 4500 एडॉक टीचर्स हैं. प्रोटेस्ट चल रहा है, टीचर्स बोल रही हैं हमें तो गेस्ट टीचर्स बनाकर छोड़ दिया गया है, परमानेंसी नहीं है हमारे जॉब में. So what is the importance of higher education? First, let us understand that economic progress is most of the developed countries and it can be attributed to the contribution of their higher education institutes. जब हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करते हैं किसी डेवलप्ड कंट्री की, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहाँ से शुरू होता है? ज्ञान से, शिक्षा से, राइट. अगर आप एजुकेटेड हो, इकोनॉमी आगे ज्यादा बढ़ेगी. अगर आप ज्यादा लोग अनएजुकेटेड हैं तो इकोनॉमी कहाँ से अच्छा काम करेगी, कहाँ से आगे बढ़ेगी? So the economic progress also depends upon the literacy and higher education. And higher education, it deals with higher education institutes. There are ample examples of institutes of higher education being centers of social changes and revolutions. So the Indian independence struggle is said to have been strengthened and revitalized by student activism in the universities. A healthy and civilized society depends in part on the quality of higher education. देखो, जितना ज्यादा आप पढ़े लिखे होगे उतना ज्यादा आप समझ पाओगे कि आपके साथ कौन गलत कर रहा है, राइट. और जितने ही ज्यादा आप कम पढ़े लिखे होगे उतना ही ज्यादा आप एक्सेप्ट करोगे. अगर आपके ऊपर कोई डोमिनेशन हो रहा है या आपको कोई दबा रहा है, उस चीज को आप एक्सेप्ट करने लगोगे. बट अगर आप वहीं एजुकेटेड हो, नॉलेजेबल हो, तो आपको पता होगा कि ये सब चीजें मैं सहने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ या बैठी हूँ, राइट. आप उसके खिलाफ आवाज उठाओगे. और हमने अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी ये चीज देखी है. स्टूडेंट एक्टिविज्म इतना जोरों शोरों पे था कि कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स भी एक बहुत ही मेजर पार्ट थे और मेजर रीजन थे हमारे इंडिपेंडेंस के पीछे. State of Indian higher education system. In the last 30 years, higher education in India has witnessed rapid and impressive growth. India's higher education system is the third largest in the world, which is next to US and China, and that's very impressive. Indian universities, they still but continue to lag behind world-class universities like Harvard, Cambridge and Oxford. देखो, वैसे तो माना जाए हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम थर्ड लार्जेस्ट है दुनिया में, यूएस और चाइना के बाद आता है. बट अगर हम कंपेयर करें यूनिवर्सिटीज को, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड के आगे हमारी यूनिवर्सिटीज अभी भी काफी पीछे हैं. Indian higher education system is performing below par in terms of questionable quality of output from the institutes. Plus, there is also less amount of research and development works. R&D भी बहुत कम है हमारे universities और institutions में. And also, above all of this mess, there is a challenge of ad hoc teachers as well. अब ये mess तो काफी था ही नहीं कि अब एक ये challenge भी आ गया है ad hoc teachers का. Ad hoc teachers, they feel that there is lack of job security.
to their position. Adhoc teachers का मानना यह है कि हम साल साल निकल जाते हैं और हम परमानेंट नहीं हो पाते, हम टेम्पररी रहते हैं, गेस्ट टीचर्स के तौर पे हमें बिठा दिया जाता है, कोई बीमार है, कोई कैसा है, हमें घुसा दिया वहां पर, बट परमानेंसी कहाँ है? There are many factors that have resulted in the bad state of education system today. One of the major factors is lack of job security among teachers, rendering their services on ad hoc or contractual basis. They feel insecure. Culture of ad hocism has unfortunately percolated through India's education system also. Temporary contractual teachers आ जाती हैं, टेम्पररी बेस पे पढ़ा के जाती हैं, अब वो पढ़ा रही हैं उस पीरियड के लिए, बच्चों के साथ उनका लिंक अच्छा बैठ गया है, राइट? फिर उसके बाद अचानक से जो उनकी जगह टीचर जो लीव पे गई हुई थी वो वापस आ जाती है, वो वहां से चले जाते हैं, एक लिंक टूट जाता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बैठ गई होती है टीचर के साथ, वो भी टूट जाती है। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस चीज को अगर समझ ले, मिनिस्ट्रीज अगर इस चीज को अच्छे से समझ ले कि एडहॉक टीचर्स सिर्फ एजुकेशन ही नहीं बल्कि इमोशनल कह सकते हो आप, स्टूडेंट के साथ इमोशनली भी जुड़े होते हैं टीचर्स, राइट? सिर्फ क्लास में आकर लेक्चर देकर नहीं चले जाते हैं, इमोशनल कनेक्शन भी होता है, मेंटल कनेक्शन भी होता है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, तो एजुकेशन सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। अगेंस्ट यूजीसी गाइडलाइंस, these are the tensions which are arising. First tension is that it is against UGC guidelines. UGC guidelines stipulate the universities to absorb the ad hoc teachers into the permanent grade. Despite the guidelines, many ad hoc teachers are hired only for a fixed number of months. ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, हमारे कॉलेजेस में भी हुआ है, मेरे साथ मीन्स मेरे कॉलेज में भी हुआ है, that ad hoc टीचर्स कुछ टाइम के लिए आती हैं और आकर चली जाती हैं, राइट? एक उन टीचर के साथ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, प्लस उस टीचर की भी स्टूडेंट्स के साथ एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, प्लस वो जो सब्जेक्ट पढ़ा के गई होती है या वो टॉपिक समझा के गई होती है, उसका समझाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जब वो चली जाती है कोई और टीचर फिर उनकी जगह आती है, उसका बिल्कुल डिफरेंट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग या टीचिंग होता है या एक्सप्लेनिंग होता है, राइट? तो लास्ट में सफर कौन करता है? बच्चा करता है, स्टूडेंट करता है, राइट? यूजीसी ने गाइडलाइंस भी निकाली हैं कि कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को इन एडहॉक टीचर्स को अब्सॉर्ब करना है, अपने परमानेंट स्टाफ में ऐड करना है, बट ऐसा कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी मानने को तैयार ही नहीं है। कुछ महीनों के लिए, फिक्स नंबर ऑफ मंथ्स के लिए हायर करते हैं, फिर निकाल देते हैं। Lack of growth opportunities. These ad hoc teachers remain on the periphery of the education system. Periphery means जो boundary है, बिल्कुल ऐसे रिम पर बैठी हुई हैं, उन्हें अंदर इंक्लूड ही नहीं किया गया है। They are sitting on the rim of the education system. They have not been included. They have very little opportunity to grow and increase their capabilities because you are hiring them for a limited period of time. How are they going to grow in their capabilities or enhance their teaching skills when they are just being there for weeks or months? That's it, right? They are often not allowed to mingle with the mainstream segment of teachers or considered equal to them, even when they fulfill the rigorous guidelines of also. So you are not only disturbing the student or the education system, you are also disturbing the mental condition or mental state of these ad hoc teachers also. यूनिवर्सिटीज यूजीसी की गाइडलाइंस ना मानकर क्या कर रही हैं? सिर्फ बच्चों के एजुकेशन को या बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, बल्कि उन एडहॉक टीचर्स के मेंटल स्टेट को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है। प्लस दे हैव लैक ऑफ मोटिवेशन। मान लो मैं आपको कहती हूँ कि ठीक है हम आपको एम्प्लॉय कर रहे हैं, आप जॉब सीख कर रहे हो, और मैं बोल देती हूँ ठीक है हम आपको ले लेंगे नौकरी पर, बट हम आपको 2 महीने के लिए ही रखेंगे, और 2 महीने से भी पहले मैं आपको निकाल देती हूँ क्योंकि आपको जिस टीचर का रिप्लेसमेंट बना के लेकर आए थे वो टीचर वापस आ गया है छुट्टी के बाद, तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। प्लस आपको पता है कि आप 2 महीने के लिए ही पढ़ा रहे हो किसी क्लास को या किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को, तो आप वो 2 महीने में ना वो लेवल ऑफ मोटिवेशन नहीं आएगा, और अगर आपको वहीं पता है कि आपकी परमानेंट जॉब है यहाँ पर, तो वो मोटिवेशन हर दिन अलग आएगा। नाउ सॉरी, the teachers, ad hoc teachers, they find lack of motivation in coming up to their job regularly because they are just there for few weeks, 2, 3 or even 4 weeks, just that. Ad hoc teachers are often subjected to humiliation and exploitation also. The main permanent teachers, they sometimes do not treat them at par with them. Ad hoc teachers को जो मेन स्टाफ ऑफ जो परमानेंट स्टाफ है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, उन्हें अपने इक्वल नहीं समझते कुछ लोग। तो मोटिवेशन क्या मिलेगी रोज उठकर कॉलेज आने की? प्लस दी सैलरीज आर ऑल्सो वेरी लेस, राइट? Plus, it will also have its effect on economy. Poor quality of teaching leads to general lack of motivation and interest among the students, right? So, there is a need to revamp the education policies. There should be teacher development programs which should be conducted. Plus,
there's a need to enforce higher standards of transparency in the working of institutes and universities as well. Okay. Case for including Tulu in the 8th schedule. Now, why Tulu should be given a place in 8th schedule? This is the question. Tulu is a textbook example of linguistic discrimination. एक Dravidian language है ये. It's a Dravidian language whose speakers are concentrated in 2 coastal districts of Karnataka and in Kasaragod district of Kerala. So Karnataka and Kerala के कुछ coastal districts में ये जो Tulu language को बोलने वाले लोग हैं वो रहते हैं. Kasaragod district is called Saptabhasha Samgama Bhumi. That is confluence of 7 language and Tulu is among the 7th language. Remember these fact for prelims. ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये आपको facts prelims के लिए याद रखने हैं, ठीक है? ऐसे ही नहीं पढ़ना है सिर्फ. You have to remember which district is known as Saptabhasha Samgama Bhumi. It is the Kasaragod district. Where is Kasaragod district? It is in Kerala. And which is the 7th language in this Saptabhasha Samgama? It is Tulu. Okay? तो ये ऐसी बातें याद रखो, लिख लो, just make a flow chart or something. The census reports 18,46,427 native speakers of Tulu in India. And the Tulu-speaking people are larger in number than speakers of Manipuri and Sanskrit. Manipuri Sanskrit को फिर भी डाला गया है, 8th schedule status दिया गया है. पर इन दोनों से ही कंपेयर करें तो तुलु लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज्यादा हैं. इसलिए ये बात ऑथर रख रहा है कि तुलु को भी 8th schedule में एक पोजीशन देनी चाहिए. The Robert Caldwell in his book A Comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Language called Tulu as one of the most highly developed language of Dravidian family. Present-day Tulu linguistic majority area is confined to the region of Tulu Nadu, which comprises district of Dakshina Kannada, Udupi in Karnataka and northern part of Kasaragod district of Kerala up to the river Payaswani or Chandragiri. Which river is known as Payaswani? Chandragiri river. Okay, yaad rakhna. So efforts are being made to include Tulu in 8th schedule of the constitution. If included, अगर Tulu language को 8th schedule में include कर दिया गया, it will also get recognition from Sahitya Academy. So all the works, all the books written in this language would be translated into other recognized Indian languages also. होगा क्या? देखो अगर तुलु को 8th schedule में डाल दिया गया तो वो साहित्य अकेडमी से भी इसको recognition मिल जाएगी. यानी कि जो भी किताबें, जो भी लिटरेचर तुलु लैंग्वेज में अब तक लिखी गई है उनको बाकी की इंडियन रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज में भी कन्वर्ट किया जाएगा. प्लस जो MPs हैं, MLAs हैं, वो भी तुलु लैंग्वेज बोल सकते हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में. और जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे कि आप सभी कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, तो आप भी अपने एग्जाम को तुलु लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या लिखने के योग्य बन सकते हैं. ओके. Now, Article 29 of the Constitution provides that a section of citizens having a distinct language, script or culture have the right to conserve the same. Remember Article 30? Now remember Article 29. Minority educational institutions से related है 30 article. Article 29 related है. This particular article provides section of citizens having different language, script or culture the right to conserve them. कुछ अगर ऐसी citizens हैं, ऐसे group of citizens हैं जिनकी अपने खुद की different language है, script है या culture है, तो Article 29 उन्हें ये protection देता है कि आप अपने culture, script या language को conserve करके रख सकते हैं. 8th schedule of Constitution of India lists the official language of Republic of India. And as per Article 344 and 351 of Indian Constitution, the 8th schedule includes recognition of the 22 languages. Those 22 languages you have to tell me in the comment section. वो जो 22 language हैं, जो Article 344 और 351 जिन्हें recognition provide करती हैं, वो आप मुझे comment section में बताएंगे. This is your homework for today. The US is weakened by Soleimani's killing. The US killing Iranian Major General Qasem Soleimani is an airstrike. Now this we have discussed yesterday also. ये तो हमने कल भी अच्छे से discuss कर लिया था. I'll upload the PDF on Telegram channel. You can just go through it. Link of Telegram channel is given below in the description box. Let us understand this particular news related to urban cooperative banks. Stressed urban cooperative banks to face PCA-like curbs. Reserve Bank of India has decided to impose restrictions on urban cooperative banks for deterioration of financial position in line with PCA framework. RBI ने ये कहा है कि हम कुछ restrictions अब UCB पे भी लगाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ PCA के framework को कुछ points को violate किया है.
The move comes in the wake of the recent crisis at PMC Bank. So we have to understand what is urban cooperative, what are these banks. Now this is important for prelims because in 2019 they were in news constantly. लगातार 2019 में ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है न्यूज में रहे हैं. So now 2020 also they are in news. So you have to remember this for your prelims. The term urban cooperative banks, though not formally defined, refers to primary cooperative banks located in urban and semi-urban areas. जितने भी urban semi-urban areas में वहाँ पर जो primary cooperative banks हैं उनको हम urban cooperative bank बोलते हैं. अभी इसकी कोई पक्की definition नहीं दी गई है कहीं भी. They are registered as cooperative societies under provision of either the State Cooperative Society Act or the Multi-State Cooperative Society Act of 2002. Okay. And what is the importance of UCBs? From its origins then to today, the thrust of UCBs historically has been to mobilize savings from middle and low income urban groups and give credit to their members which belong to weaker sections. They cater to banking needs of small traders, micro enterprises, individuals, etc. Alright. Now LSD has been in news. Lysosomal storage disorders. The Madras High Court has directed Centre to consider providing medical care to economically poor patients suffering from lysosomal storage disorder. So what is this? This disease, it is a group of about 50 rare inherited metabolic disorder that result from defects in lysosomal function. So basically ये inherited metabolic diseases हैं. 50 inherited metabolic disease का group है जिसको हम LSD बोलते हैं. These are sacs. What are lysosomes? They are sacs of enzymes within cells that digest large molecules and pass the fragments on to the other parts of the cell for recycling. This process requires several critical enzymes. If one of these enzymes is defective because of mutation, large molecules accumulate within that cell and gradually it kills it. Okay. So this is very, very important for your prelims. These LSDs are caused by lysosomal dysfunction. Clear? So this was all for today. I hope you enjoyed the class. Do not forget to subscribe to my channel. Share this video with the other aspirants. Thank you and have a nice day.